Hello, class 7th. You all are welcome in your social studies class. Hope you all are doing good and you all are working hard in your study. आज बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 इनसाइड आवर अर्थ। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अर्थ के अंदर क्या है। अभी तक हमने पढ़ा दैट वी लिव ऑन द अर्थ, हम अर्थ पर रहते हैं, है ना। लेकिन अर्थ के अंदर क्या है, जो हमारी पृथ्वी है। सपोज दिस इज आवर अर्थ। सो अर्थ क्रस्ट पर बच्चों, अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर और हम इसी अर्थ क्रस्ट पर रहते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है व्हाट इज इनसाइड आवर अर्थ? चलिए आज इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी is the science dealing with the real differentiation of the earth surface. ज्योग्राफी क्या है बच्चों? ज्योग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जो डील करता है रियल differentiation of the earth surface as shown in the character, arrangement and interrelations of such elements as climate, elevation, vegetation, population, land use. So ज्योग्राफी में बच्चों ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये आप पढ़ेंगे। Characteristics that is related all about the geography of our earth, geography of our world and geography of our universe too. Now interior of the earth, earth के अंदर क्या है बच्चों? The interior of the earth जिसे हम क्या बोलते हैं? It is also a dynamic one like its surface and it's made up of rocks. So these rocks, they are formed in layers one upon another and exert enormous downward pressure. There's a great heat in the interior of the earth and the pressure and the heat act together to keep the interior in dynamic state. How do we know about the earth's interior? अर्थ के इंटीरियर के बारे में कि भूमि के अंदर क्या है, अर्थ पृथ्वी के अंदर क्या है, हमें कैसे पता चला? बच्चों इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरटेक डायरेक्ट स्टडीज। डायरेक्ट स्टडी हम नहीं कर सकते अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। दस बहुत सारे जो नॉलेज है अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर। किसके बिहेवियर पे? इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ सेस्मिक एंड अर्थक्वेक वेव्स। जब भूकंप आती है बच्चों तो उसकी जो वेव्स होती है, उसकी जो लहर है, उससे हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ना अर्थक्वेक वेव्स ये जनरेट होती है कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से जनरेट होती हैं and they travels to the surface at different speeds. They tell us whether the interior is constituted of solid or liquid because S waves or surface waves are not transmitted through liquids. Now moreover, volcanoes and earthquakes could throw up materials from the interior of the earth to the surface. On the basis of certain laws of chemistry and physics, scientists have established that जो इंटीरियर है अर्थ का वो बना है रॉक्स इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। ऐसी चट्टानें जो ठोस हैं और जो तरल हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है। सो हेयर वी हैव आवर लिथोस्फेयर, here we have our upper mantle। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं ये माउंटेन है और लैंड एरिया है। और ये भी बच्चों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसको हम ओशियन क्रस्ट बोलते हैं और यहाँ आपका ओशियन है। यानी कि जो ओशियन है ना उसके नीचे भी एक जमीनी सतह है, एक क्रस्ट है। स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बच्चों इंटीरियर ऑफ अर्थ वो डिवाइडेड है 3 मेन लेयर्स that are crust, mantle and core. Now here layers of earth is divided into crust, mantle and core. अब हम बच्चों क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रस्ट क्या है? ये एक आउटर पार्ट है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी की सतह का आउटर पार्ट है, ठोस पार्ट है। सॉलिड outer shell of the earth is called crust। और बच्चों इसकी जो लेयर है ये बहुत ही ज्यादा थिन है, पतली है and its thickness varies from about 5 kilometer under the ocean to about 40 kilometer under the plains like Gangetic Plain or the prairies of North America. So under high mountains such as Himalayas and the Alps, the crust may vary in thickness from 50 kilometer to 80 kilometer. The crust, it can be broadly divided into continental landmass and ocean floor that we have discussed, ocean floor and we have continental landmass. Main constituent क्या है बच्चों? कौन कौन सा मिनरल्स है, कौन कौन से खनिज है जो इस्तेमाल होते हैं फॉर द कॉन्टिनेंटल लैंडमास? दे आर सिलिका, एल्यूमिनियम, टुगेदर इन्हें सियाल बोलते हैं। SI सिलिका, AL एल्यूमिनियम। नाउ द ओशनिक क्रस्ट, उसे हम सीमा बोलते हैं।
साइमा बोलते हैं, सॉरी, Si silica and Ma magnesium. So after its main mineral elements. Okay, here you can see the structure of earth properly. Here we have the outer part, crust, and beneath the crust we have mantle, outer core, and inner core. So basically we have three parts of earth: crust, mantle, and core. Mantle. Now below crust we have mantle, which extends to the depth of 2,900 kilometers. Now the mantle is divided into two parts, that is upper and lower mantle. While the upper mantle ये solid state का है, lower mantle क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा पिघला हुआ है, semi molten condition में है. Here we have core. Core lie करता है between mantle, below the mantle, sorry, the last layer of the earth. So it extends to a depth of about 3,500 kilometer to 5,000 kilometer. और ये divided है बच्चों two sections में, outer core and inner core. जो outer core है बच्चों वो liquid, वो तरल पदार्थ में है, तरल state में है, said to be in the motion. एक वो motion में है, एक movement चल रहा है बच्चों, and the motion is generated by difference in heat. Now boundary zone. So before reading the boundary zone, let us look at the diagram of interior of earth. Here we have crust, mantle, outer core, and inner core, and here you can see the height is given to you: lithosphere, crust plus the upper mantle. Each of the layer is separated from the other by a wide boundary zone. एक लेयर दूसरी लेयर से सेपरेटेड है किससे बच्चों, एक बाउंड्री जोन से, which has the characteristics of the both upper and lower parts, and the boundary that separates the crust from the mantle उसे हम मोहो discontinuity बोलते हैं. And it was discovered, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था बच्चों, ये डिस्कवर किया गया था, it was discovered by an earth scientist, एक अर्थ के वैज्ञानिक के द्वारा जिनका नाम था अंद्रीजा मोहरोविक. And the boundary between the core and the mantle is known as core mantle interface. Do you know, क्या आपको पता है जो प्लेटिनम है वो एक तरह का लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, and it has remarkable resistance to corrosion. अब हम बच्चों चट्टानों और खनिज के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स. सो द लिथोस्फेयर, बच्चों हम सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत सारे डोमेन से मिलके बनी है, बहुत सारे स्फीयर से मिलके बनी है. नाउ वी हैव रॉक्स एंड मिनरल्स. So the little lithosphere consists of rocks. Litho is a Greek word which means rock. Rocks are made up of minerals, and this is because rocks are constantly being made and destroyed by nature itself. Rock बच्चों define होता है as a natural solid material which forms the crust of the earth, and rocks do not have a definite chemical composition. They may be hard like granite or soft like clay, and the hardness, color, and rigidity depend on the mineral content of the rock. Now, the following table depicts the comparison between rock and minerals. So here we have rock and minerals. Rock क्या है? Rock is an aggregate for minerals. A mineral contain only one or has atomic structure. A rock is a natural solid material forming the earth. Now the mineral is a natural inorganic compound found in rocks. Rocks, they are chiefly of three types, and there are about 2,000 types of known minerals. A rock, it has no definite chemical composition, and they can vary from specimens found at one place to those found at another place. And mineral has a definite chemical composition. But for minerals, it can be divided into two categories: metallic and non-metallic minerals. Here we have metallic minerals. So the rocks which are rich in metals, उन्हें हम ores बोलते हैं, and ores have a tendency to get concentrated, particularly in rocks. It is because when magma comes in contact with water, ये dissolve करता है some rich minerals को, and the solution है बच्चों, the solution is leading to the concentration of metallic minerals at a certain place. Now mines जो है बच्चों, जो खदान होती है, therefore sited where a large concentrations of metallic minerals are found, and some of the important metallic minerals, they are iron, gold, silver, copper, lead, zinc, mercury, platinum, etc. अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स बच्चों वो मिनरल्स होते हैं that are found in the earth crust, जो एक सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में मिलते हैं और सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर रिगार्डेड एज मिनरल्स. हाउएवर कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग्स जैसे कि बच्चों सॉल्ट, क्ले, कोल एंड पेट्रोलियम, दे आर इंक्लूडेड अमंग नॉन मेटालिक मिनरल्स. हियर वी हैव सॉल्ट, गैब्रो, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एंड शेल, बसाल्ट. नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रॉक्स.
ऑन द बेसिक ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स बच्चों क्लासिफाइड है तीन कैटेगरीज में इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक सो इग्नियस रॉक्स so these are the primary rocks because they were the first to be formed on the earth and all the other rocks they are ultimately derived from them now they are formed by cooling and solidification of molten matter of earth now igneous ye derive from latin word ignis meaning fiery the sanskrit word agni also has a similar meaning there are two type of igneous rock, intrusive igneous rock and extrusive igneous rock. Now the molten matter, जिसको बच्चों हम magma भी बोलते हैं, it is known as magma. During its movement into rock surfaces and comes out on Earth's surface. और बच्चों it is then known as लावा लावा जो है बच्चों रैपिडली कूल डाउन हो जाता है जल्दी से कूल डाउन हो जाता है और सॉलिड बन जाता है रॉक फॉर्म इन सच वे उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं बसाल्ट एक एग्जांपल है बच्चों एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का और बच्चों अदर इग्नियस आपकी रॉक्स हैं इट हैज फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर being thermal in origin solidification it may take place in the interior of earth as well rocks बच्चों they are formed इसे हम intrusive igneous rock बोलते हैं because इनकी cooling process धीरे होती है और इनका solidification भी slowly होता है they have a large grain so these rocks are also called plutonic rocks and these rocks are of various types depending on how and when the magma solidifies the important example of intrusive rocks are granite and gabbro अब बच्चों हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में सो दीज रॉक्स सप्लाई वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स ग्रेनाइट इज यूज्ड फॉर हाउस बिल्डिंग एंड आइडल मेकिंग देन वी हैव प्यूमाइस स्टोन इज यूज्ड एज एन abrasive basalt and then we have dolerite are used for road making gravestones and monuments are made from these hard bearing rocks नेक्स्ट काइंड ऑफ रॉक्स इज सेडिमेंट्री रॉक्स बच्चों ये रॉक फाउंड होती है बहुत सारे फॉर्म्स में और रिगार्डेड एज द अर्थ आउटर मोस्ट क्रस्ट और एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट जैसे कि टेम्परेचर है रेनफॉल है एयर है ये इन्हें ब्रेक डाउन करती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और ये मटेरियल बच्चों इट इज रिमूव बाय रिवर विंड्स एंड ग्लेशियर्स और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं डिपॉजिट होते हैं डिप्रेशन oceans and lakes and layer upon layer is thus deposited over millions of years. Now these layers are then compacted or cemented due to heavy overlaying pressure. अब धीरे धीरे करके बच्चों ये लेयर्स क्या होती है हार्डन हो जाती है ये चट्टाने कठोर हो जाती हैं समटाइम द रिमेन ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट विच गेट ट्रैप्ड इन दीज लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्हें हम फॉसिल्स बोलते हैं और इन्हीं लेयर्स में कुछ मरे हुए जो प्राणी है प्लांट्स है वो मिल जाते हैं उसी को बच्चों हम फॉसिल्स बोलते हैं कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस ये क्या है ये फॉसिल फ्यूल्स है जो ऑब्टेन होती है इस तरह की रॉक से एग्जांपल है बच्चों लाइमस्टोन सैंडस्टोन शेल देन वी हैव कॉन्ग्लोमेरेट एंड स्लेट एंड मेनी सेडिमेंट्री रॉक शेल कंटेन ऑयल सेडिमेंट्री रॉक्स आर widespread and beside being source of coal petroleum and gas also form soil then we have characteristics so ye rock ye form hoti in the layer of or strata and therefore also called stratified rocks being of secondary origin they are also called secondary rocks now they are made of particular matter they consist of fossil of animals and plants and these rocks bear marks of ripples waves and mud and they are non crystalline rocks they are soft and easily eroded they form about 75% of earth's surface then we have economic importance ये मेन सोर्स है ऑफ कोल मिनरल सॉइल का क्ले सीमेंट ग्लास एंड सैंड दे आर मेड फ्रॉम दीज रॉक्स लाइमस्टोन बच्चों यूज होता है फॉर बिल्डिंग पर्पस और बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो ऑब्टेन होते हैं इन रॉक से जो कंटेन करते हैं बल्क क्रिस्टलाइज पार्टिकल्स here you can read the comparison it is given between igneous and sedimentary rocks formation cooling of lava deposit of sediments resistance very hard very soft type primary rocks secondary rocks location volcanic region and depression seas and lakes then we have metamorphic rock so the word metamorphosis ये इसमें बच्चों ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है ग्रीक इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म कैसे जो चट्टान है जो रॉक्स है उनका फॉर्म जो है वो चेंज होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स दे आर एक्चुअली इग्नियस ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती है बच्चों दैट हैव बीन चेंज ड्यू टू द एक्सेसिव हीट जब उनमें ज्यादा गर्मी दी जाती है प्रेशर दिया जाता है जब इनसाइड अर्थ से प्रेशर आता है तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं नाउ various minerals combine होते हैं to form new minerals and rock thus transform are called metamorphic rocks ये act करती है as a form of metamorphism takes hundreds of years the main example of marble slate genesis and we have quartzite quartzite etc
आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. So they are hard, weather resistant rocks that cannot be eroded easily. Then we have metamorphism take place at great depth in the earth interior. So under the condition of intense temperature and pressure, they are brought to the surface by movement deep within the earth. Now they are recrystallized rocks. ये क्या है? ये recrystallized rocks हैं. Here we have examples. Origin rock or metamorphic rock. ठीक है, limestone से we get marble, shale, slate, granite, gneiss, sandstone, quartzite, coal, graphite and mica, schist. बच्चों ये ताजमहल है, ये भी एक खूबसूरत सफेद रंग के मार्बल से बना है. नाउ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इसका आर्थिक रूप से बच्चों, आर्थिक रूप में इसकी क्या महत्वता है? सो ग्रेनाइट, ग्रेफाइट एंड मार्बल ये ऑब्टेन होते फ्रॉम दीज रॉक. ताजमहल बच्चों इट इज बिल्ड अप ऑफ प्योर मार्बल. फाइन पाउडर्स बच्चों मिलते हैं इस रॉक से. आफ्टर रिफाइनिंग मिनरल्स कैन यील्ड मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. और ये कितने एक्सपेंसिव होते हैं हम सभी जानते हैं. हाउ गोल्ड इज एक्सपेंसिव, सोना कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है. Here you can see the rock cycle. Here we have number one igneous rock. Weathering और erosion की वजह से it gets sedimentary. और sedimentary rock में बच्चों जब dead plants और dead animals मिल जाते हैं तो it create fossils. Very important term. Then it change the form. कैसे मेटामॉर्फिक बन जाता है? बहुत सारे प्रेशर से, हीट की वजह से. देन अगेन जब ये कूल डाउन होता है तो ये इग्नियस रॉक फॉर्म हो जाती है और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू रहती है. The rock cycle is the change in the type of rocks within the sedimentary, igneous, and the metamorphic varieties, including the process of weathering and erosion. And in this continuous process, rocks are recycled and converted into one or the another form through the weathering, erosion, melting, solidification, and change of form of account of pressure and heat. And the rock cycle continues endlessly, turning over the Earth's raw material and maintaining its freshness and vitality down the ages. Here we have completed our chapter, learn the keywords, and also very important, summarize the main summary point of the chapter. Let's revise. The interior of the earth is also dynamic, one like its surface, and it is made up of rocks. Based on chemical properties, the interior of the earth is divided into the three main layers: crust, mantle, and core. Revise other remaining points properly. And I'll be seeing you all in your another SST class. Revise the chapter. Know more about your earth inside, outside. That's all for today. मैं मिलूंगी आपसे अगली SST क्लास में. Bye bye.